Hello everyone, this is Suvojeet and in this video I am discussing some problem based of construction of green function। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन फंक्शन कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, उसका अप्रोच वन देखे थे। अप्रोच वन क्या था? पहला फर्स्ट स्टेप था फाइंड पी एक्स पी टी, सेकेंड स्टेप था फाइंड सी एफ। ओके, एंड यहाँ पर जो सी एफ की मदद से f1x एंड f2x फाइंड करना, एंड देन थर्ड स्टेप था y1x एंड y2x कंस्ट्रक्ट करना विथ हेल्प ऑफ f1x एंड f2x। ओके, एंड ऐसा करके कंस्ट्रक्ट करना कि वो आपका बाउंड्री जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करे। ओके, एंड फोर्थ स्टेप था फाइंड ए। ओके, with help of this relation WPT whole inverse, where W is Wronskian. Okay, and lastly green function is defined as G1 and G2. Okay, where G1 is equals to a y1x and y2t, and G2 is a y1t y2x. Okay, this is for x less than t region, this is for x greater than t region. Okay, now I solving some question, okay, related to construction of green function. So our first question is okay, first question is given d2y dx square is equals to 0 and given boundary condition y0 is equals to 0 and y dash 1 is equals to 0. Find green function. ओके तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था? फाइंड पी एक्स एंड पी टी। ओके, so what is px? Px is the coefficient of d2y dx square term. Here coefficient is -1, so px is -1, and because of px is a constant term, that's why pt also -1. Okay, second step था हमारा find auxiliary equation and find f1x and f2x. Okay, so cf is minus m square is equals to 0. So m is equals to 0, 0. So cf is equals to y is equals to c1 plus c2x, okay, into e to the power 0x, which is 1. So c1 plus c2x. Okay. What is our third step? Third step is construction of y1x and y2x. Okay, and make sure that satisfy our boundary condition. Third step is construction of y1 and y1x and y2x. So y1x is, देखिए हमारा BC बाउंड्री कंडीशन कैसा दिया है? दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन। तो हम कॉपी करते हैं, तो दिस इज आवर BC। ओके, सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है हमारा x इज इक्वल्स टू 0, y शुड बी 0। तो हमको हमारा क्या क्या f1x क्या मिला? हमको 1 मिला, एंड f2x क्या मिला? हमको x मिला। दिस इज f1x एंड दिस इज f2x। ओके, तो so what is f1x? सॉरी, हमको y1x एंड y2x कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो y1x शुड बी व्हाट? ये दो टर्म से हमको y1x कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम y1x को x कर लेते हैं, क्योंकि देखिए x इज इक्वल्स टू अगर 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मतलब इट सेटिस्फाई आवर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ओके,
एंड y2x हम क्या करेंगे, y2x क्या है, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है, y डैश इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इसके लिए हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम y2x की जगह सिंपली हम 1 रख देते हैं। ओके, सिंपली 1 कर देते हैं, क्योंकि देखिए y डैश अगर करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारा 0 आएगा। ओके, और x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर तो x तो टर्म हम लिए ही नहीं, तो x इज इक्वल्स टू 1 ऐसे भी पुट अप नहीं होगा। ओके, तो ए भी सेटिस्फाई हो रहा है, ए भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें अगर x अगर लेते तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट अप होता, तो हम x लिए नहीं, हम सिर्फ 1 लिए हैं, एंड इट्स y dash is equals to 0 satisfy this property actually, that boundary condition. Okay, so we construct actually y1x and y2x. Our fourth step is what? Fourth step is construction of a. Okay, finding the value of a, and हम a कैसे फाइंड कर सकते थे, with help of a is equals to wpt whole inverse. So w, what is w is Wronskian, that is y1x is x, y2x is 1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 1, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 0। नाउ इसका डिटर्मिनेंट इज व्हाट -1। ओके, so now a is equals to, now I am finding a, this is our step 5. A is w pt whole inverse. Okay, so w is -1 and pt is what, pt is I think -1, pt is yeah, pt is -1. Okay, so this is -1 whole inverse, which is 1. Okay, now our green function, now from definition of green function, from definition of green function definition of green function, what, g of xt is equals to g1 what is g1, g1 is a. Okay, what is a, value of a, value of a is 1. Okay, this value of a is 1. फिर क्या था, y1x इंटू y2t, y1x का वैल्यू कितना है x। ओके, and y2t is 1, so this is for x less than t region. Okay, and is into also and what is our second term, second term is t, because a into y1t into y2x, y1t क्या होगा आपका, y1t is t, x की जगह हमको t पुट करना है तो t हो जाएगा, एंड y2x is 1, so this is 1, 1 into t into 1, that is t. Okay, so this is for x greater than t region. This is your green function. Okay, now और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. Okay, so question number 2. Given L cap y is equals to d2y dx square plus y, given bc क्या है, बाउंड्री कंडीशन y0 is equals to 0, y dash 1 is equals to 0, find green function.
So this question is actually based on Arifkin book. In size problem of Arifkin book. Okay. So now यहाँ पर एल कैप क्या है? एल कैप इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके, व्हाट इज एल कैप? एल कैप इज नथिंग बट ए डिफरेंशियल ऑपरेटर. मीन्स इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ डी. व्हाट इज डी? डी डी मीन्स डी बाई डी एक्स. ओके, अगर डी स्क्वायर बोलेंगे तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है? डी टू डी एक्स स्क्वायर. ये सब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किया होगा. एंड डी क्यूब इज डी थ्री डी एक्स क्यूब. तो एफ ऑफ डी मीन्स यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है. ओके, तो दिस इज एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट बाय एल कैप. एल कैप वाई. एल कैप वाई मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. एल कैप वाई मीन्स एल कैप वाई मीन्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई. यहाँ से अगर y कॉमन ले ले तो क्या होगा? यहाँ से अगर y कॉमन ले ले तो क्या होगा? y 1 प्लस डी टू डी एक्स स्क्वायर. ओके, ए वाई एंड ए एल कैप क्या है? दिस फंक्शन को डिनोट कर रहा है, दिस एल कैप. ओके, सो एल कैप इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ derivative. Okay, so this is basic thing actually. So now I solve this question. Okay, so our step 1 is what? Step 1 is find px and pt. Okay, so what is px? Px is the coefficient of d2y dx x square. So here the coefficient is 1. Okay, so px is 1 and again pt is also same because pt is what? pt is px. px में आपको x is equals to t सब्सटीट्यूट करना है. ओके, तो यहाँ पर because of px is a constant term, that's why pt also same value. Okay, so what is our step 2? Step 2 is find auxiliary equation. Okay, what is our auxiliary equation? This is m square plus 1 is equals to 0. Auxiliary equation is what? M square plus 1 equals to 0. So m is equals to what? M square is equals to minus 1, that is I square. Okay, so m is equals to plus minus I. इसका रूट्स क्या होगा? तो CF is equals to C1 cos x C2 sin x. ओके, यहाँ से हमको फंक्शन 1 क्या मिल रहा है? फंक्शन 1 मिल रहा है हमको cos x. फंक्शन 2 क्या मिल रहा है हम लोगों को? हमको sin x. ओके, अब हमको cos x एंड sin x की मदद से हमको क्या बोलते हैं y1x एंड y2x कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा. एंड ऐसा करके ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई करे. ओके, तो थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्शन ऑफ y1x एंड y2x. ओके, तो व्हाट इज आवर बाउंड्री कंडीशन? दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन. कॉपी कर लेते हैं. ओके, दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन. now तो y1x क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? y1x इज इक्वल्स टू, अच्छा पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज 0. ओके, तो हम y1x को हम कर देते हैं sin x. देखिए sin x को लिए हैं क्योंकि देखिए अगर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो क्या होगा? sin 0 एंड वी नो sin 0's वैल्यू इज 0, तो y इज 0. ओके, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, तो y1x कॉन्स्ट्रक्ट हो गया. ना y2x क्या होगा आपका?
अच्छा, y2x के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट x इज टू 1 y डैश इज टू 0. ओके, तो इसके लिए हम लेते हैं, क्या होगा, हमारे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स था ना, तो वी कैन ड्रॉ cos x, cos 1 also 0, बट ऐसा करते cos x minus 1. ओके, तब क्या होगा, अगर x इज टू, अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करें, ओके, तो क्या होगा, y2 0 होगा एंड उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा ऑब्वियसली. हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके, तो नाउ आवर फोर्थ स्टेप इज, फोर्थ स्टेप क्या था, फाइंड Wronskian. Wronskian is w is equals to y1x is sin x and y2x is cos x minus 1. ओके, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, इसका होगा माइनस साइन ऑफ x माइनस 1. ओके, नाउ तो सॉल्व करते हैं. दिस इज माइनस ऑफ साइन x, साइन x माइनस 1 माइनस ऑफ cos x माइनस 1. अब यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, दिस विल बी प्लस. तो एक इसका फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज, दिस इज साइन एक्स, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी. तो कॉस x माइनस 1 cos a minus b. So this is minus x कट जाएगा प्लस 1, so this is cos 1. Okay, our Wronskian is minus cos 1. So now step 5 is a. What is a? A is wpt whole inverse. Okay, so what is w? W is minus cos inverse minus cos 1 into pt. What is pt? क्या था, pt is 1. Okay, pt is 1 whole inverse. Okay, now क्या होगा, this is minus sec 1 because 1 by cos 1 is sec 1. Okay, so now our final step is definition of green function. What we know, that is g of xt is equals to what, a y1 x y2 t for x less than t and a y1 t y2 x for x greater than t. This is our step 5. So what is a? A is minus sec 1 and what is y1x? Y1x is sin x. Okay, I copy this portion. So y1x is sin x and cos t minus 1. Okay, this is for x less than t. Okay, and second is minus sec 1
this is sin t cos of x minus 1. This is for x greater than t. Okay, so this is your green function, required green function. So और एक क्वेश्चन करते हैं. Our third question is okay, given L cap y is equals to d2y dx square minus y, and y of x is finite. Y of x is finite between y of x is finite between minus infinity x infinity. Okay, find green function. ये भी आपका आरफकिन बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है. ओके, आरफकिन. नाउ यहाँ पर जो दिया है यही आपका बाउंड्री कंडीशन है. वाई एक्स इज फाइनाइट, ओके, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. यही आपका बाउंड्री कंडीशन है. इसको सॉल्व करते हैं. So step 1 is what? Find px and pt. So px and pt is 1 because coefficient of d2y dx square is 1. So px and pt is 1. Second step is what? Second step is find auxiliary equation. So what is auxiliary equation? That is m square minus 1 is equals to 0. So m is equals to plus minus 1. Okay, so auxiliary cf is equals to y is equals to what? c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x. Now our third is what? Third step is find y1x and y2x with help of this f1x and f2x, that is e to the power x and e to the power minus x. Okay, e to the power x and e to the power minus x की मदद से हमको y1x and y2x कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे? सो हमारा फर्स्ट देखिए, सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? अच्छा, जो बोला है देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर y ऑफ x इज फाइनाइट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, सो यहाँ पर जो रेंज दिया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी. ओके, एंड दिस इज आवर आर्बिट्रेरी पॉइंट t पॉइंट. ओके, सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी. ओके, हमको हमारा y1 is finite, y1x should be finite. This is our first first boundary condition. Okay, so y1x कैसे हम कंस्ट्रक्ट करें? y1x को हम ले लेते हैं, क्या लेंगे? e टू पावर x लेंगे या e टू पावर माइनस x लेंगे? इसको हम लेंगे e टू पावर x लेंगे. अब क्यों? अगर x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा? e टू पावर माइनस इन्फिनिटी. e टू पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है? 0. तो 0 इज ए फाइनाइट वैल्यू. अगर e टू पावर माइनस एक्स हम लेते, ओके, तो क्या होता? e टू पावर इन्फिनिटी हो जाता. e टू पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता? इन्फिनिटी. देखिए जैसे अगर e टू पावर
एक्स लिए है ना, तो इसकी जगह हम ई टू द पावर माइनस से माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0, विच इज़ ए फाइनाइट वैल्यू। ओके, अगर ई टू द पावर माइनस एक्स लेते यहाँ पर इस कंडीशन पे, तो क्या होता हमको, हमारा क्या मिलता है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज़ ई टू द पावर इन्फिनिटी विच इज़ इन्फिनिटी। So this is not an finite value. This is actually infinite value. Okay, this is infinite value and this is finite value. So our y1x satisfy this boundary condition. Okay, so this is the construction of y1x. Now I am construct y2x के लिए बाउंड्री कंडीशन हमारा क्या है, मीटर देते हैं। y2x के लिए हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या है, y2 के लिए बाउंड्री कंडीशन होगा एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी y इज फाइनाइट। ओके, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन है एट x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी y2x शुड बी फाइनाइट। दिस इज आवर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो हम क्या लेंगे, ई टू द, हमारे पास दो टर्म है, एक है ई टू द पावर एक्स, एक है ई टू द पावर माइनस एक्स। तो सिंपल हम ई टू द पावर माइनस एक्स को लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक्स के जगह अगर हम इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 विच मीन्स y2x इज फाइनाइट वैल्यू। ओके, अगर ई टू द पावर एक्स यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, विच मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा इन्फिनाइट। ओके, so this is not a finite value, so that's why I use e to the power minus x. Clear? Now now our step 4 is Wronskian, finding Wronskian. Okay, that is y1x, sorry, y1x का वैल्यू कितना है, which is e to the power x and which is e to the power minus x. इसका वैल्यू e to the power x and इसका वैल्यू e to the power minus x. ओके, इसका अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e to the power x and e to the power minus x which is 1 कट जाएगा, माइनस ऑफ e to the power x e to the power minus x minus of e to the power x e to the power minus x, so which is minus 2. Now A will be what, WPT whole inverse, W is minus 2 and PT is what, I think 1, PT is 1, yeah, PT is 1, so which is minus 1 by 2. Okay, now now our green function is what, g of xt is equals to a is 1 by 2 and y1x is e to the power x and y2t means y2x is e to the power minus x, so y2t is e to the power minus t, e to the power minus t. This is for x less than t. Okay, and again, so minus 1 by 2 e to the power t e to the power minus x, this is for x greater than t. So this is our required green function. Okay, so now I solve one more question. This is our last question. Okay, so question is minus d2y dx square is equals to
minus y by 4 is equals to f of x. Okay, and boundary condition are, what are the boundary condition? Boundary condition is y0 is equals to y pi is equals to 0 to find green function. So our step 1 is px is coefficient of d2y dx square, so that is 1 minus 1. So px pt is equals to minus 1. Now our second step is construction of auxiliary equation. So auxiliary equation is what? Minus m square minus 1 by 4 is equals to 0. So m square is equals to I square by 2 square. Okay, so m is equals to what? M is equals to plus minus I by 2. Okay, so what is our CF? CF is C1 cos x by 2 plus C2 sin x by 2. Okay, so this is our f1x and this is our f2x. f1x is cos x by 2 and f2x is sin x by 2. Okay, now our step 3 is construction of y1x and y2x. ओके, पहले हम देख लेते हैं हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या है. बाउंड्री कंडीशन इज y, दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन. ओके, दिस इज आवर बाउंड्री कंडीशन. तो पहला बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल्स टू 0, y इज 0. ओके, सो हम क्या कंस्ट्रक्ट करें? आप खुद ही सोचिए क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ये दोनों टर्म में से. ओके, y1x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 किसका होता है? साइन का वैल्यू होता है. सो साइन x बाई 2. अगर x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करें, इसका वैल्यू कितना होगा? 0. सो y इज 0. ओके, एंड आवर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज x इज इक्वल्स टू पाई, y इज ऑल्सो 0. तो क्या हम कंस्ट्रक्ट करें? y2x इज इक्वल्स टू y2x इज इक्वल्स टू, हम सिंपली कंस्ट्रक्ट करते हैं y(x by 2), सॉरी cos x by 2, बिकॉज वी हैव टू टर्म cos x by 2. क्योंकि देखिए अगर x की जगह अगर हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? cos pi by 2. cos pi by 2 का वैल्यू कितना होता है? इट इज 0. सो y इज इक्वल्स टू 0. सो ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, सो नाउ आवर स्टेप 4 इज Wronskian. So Wronskian is sin x by 2 cos x by 2. So इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? हाफ cos x by 2 हाफ sin माइनस हाफ sin x by 2. हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट कर देते हैं. सो माइनस हाफ साइन स्क्वायर x by 2 माइनस हाफ
कॉस स्क्वायर x/2। दोनों में से अगर माइनस आप कॉमन ले ले तो क्या होगा, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी प्लस, और ये हाफ भी नहीं होगा। Okay, so this value is 1, so this is minus half. Now our step 5 is A. A is WPT minus 1, W is minus half, and PT is what? PT is minus 1. PT is minus 1. This will be minus 1 whole inverse, so this is 2. So now our green function is g of xt, okay, which is a is 2, y1x is sin x by 2, sin x by 2, and y2x क्या था, cos x by 2, तो y2t होगा, so cos t by 2. Okay, this is for x less than t, and second is sin t by 2 cos x by 2. This is for x greater than 2. This is g1 actually, this term is g1, this is the g1, okay, and this term is g2, okay, and green function is, okay, this is the arbitrary point t, okay, this portion is our g1, this portion is g1, this is g1, this is for x जब आपका t से कम होगा, x का वैल्यू जब t से कम होगा, ओके, तब आपका g1 होगा, एंड दिस पोर्शन इज आवर g2, ओके। ये कब होगा, दिस इज फॉर जब x का वैल्यू आपका t से ज़्यादा होगा, ओके, x का वैल्यू जब t से ज़्यादा होगा, सो इसको ऐसा भी हम बोल सकते हैं, दिस इज t प्लस रीजियन एंड दिस इज t माइनस रीजियन, क्योंकि t से वैल्यू प्लस हो रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, एंड इधर क्या हो रहा है, t से वैल्यू माइनस की तरफ जा रहा है, ओके, एंड this t is arbitrary point we have construct, okay, so this is our answer, green function, required green function. so next वीडियो पे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन के अप्रोच 2 के ऊपर बात करेंगे। ये तो एक मेथड हुआ कि ऐसा आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन और एक भी मेथड है जिससे उस मेथड से भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ग्रीन फंक्शन को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे।